Hello friends, welcome to Ray Academy and welcome to my new live class. And in this class friends, we are going to cover weekly current affairs for February last week. Okay. And this class is very important for your upcoming examination. So I hope your preparation is going on right track. So first of all, very good evening all of you. एंड जैसे कि मुझे पता है कि आप लोग की तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी, तो इसी सीरीज में आपकी तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए मैं आप लोग के साथ जुड़ चुका हूं कि एज यूजुअल जो वीकली करंट अफेयर्स क्लासेस हैं, ओके, सो आप लोगों के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जस्ट एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो इस चैनल जो क्लासेज है इसको लाइक करिएगा। एंड अगर इफ यू फेस एनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, अगर आप किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम जो है फेस करते हैं, इफ यू फेस एनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, ओके, फील फ्री टू आस्क, प्लीज कमेंट। ओके, वेरी गुड इवनिंग सुनील, वेरी गुड इवनिंग राहिल अब्बास खान, स्वागत का प्रधान। ओके, and this class is very important for your upcoming examination. So in this class I'm going to cover most important topics for your upcoming examination, that means ki prelims and also mains. So first of all एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक जरूर करिएगा, जितने लोग जुड़ते चलेंगे आप लोग शेयर भी कर सकते हो इस सेशन को, आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, बिकॉज दिस क्लास इज ओके ओपन फॉर ऑल। तो आप लोग सभी लोगों के साथ शेयर करिएगा और जितना हो सकता है शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा और जबरदस्त तरीके से ओके विल डिस्कस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम द लास्ट वीक। वेरी गुड इवनिंग अनिशा, प्रियदर्शनी, स्वागत का साहू, स्वागत का प्रधान। So now let's start our discussion, and first of all friends I am going to tell you ki, which topic I am going to cover. So as I told you ki, I will cover the topic according to mains and then according to prelims also. So you'll have to keep in the mind, this is very important. So first of all I will discuss the topics related to, you can say ki one of the most important topic, and this topic is related to okay what Assam, okay, history, and the topic is Ahom warrior Lachit, okay, Borfu Khan and the battle of, yeah. So now let's start the first topic, and the first topic I told you this is very important, and our prime minister, sorry, our president visited Assam, okay, our president visited Assam. So first of all I'm going to tell you about the, you can say na ki context. What is the context? We should understand the context of this topic. Okay, we should understand the context of the topic. Just a minute. So am I audible? Screen is visible. Please tell me. Subhatra, Dhananjay, Salvation, Jayashree. Am I audible? Screen is visible. Okay. So now I'm going to discuss first topic of this class, and the first topic is Ahom warrior Lachit Borphu Khan and the battles of Alaboi and
Sarai Ghat. This is very important. Okay, this is very important topic. So you'll have to keep in the mind. And first of all, friends, let's understand that this topic is related to history. Okay, this topic is related to history. So for UPSC paper, this is related to General Studies paper 1. And this topic is very important for your prelims examination also. Prelims examination is also. Okay. So what is the context? We should understand what is the context. So first of all, friends, the context is Chief Minister of Assam. What? Chief Minister of Assam had announced a number of projects in connection with the 400 birth anniversary of Lachit Borphu-Khan. Okay, what 400? Okay, 400 birth anniversary. 400 birth anniversary. Okay, 400 birth anniversary of Lachit Borphu-Khan. Lachit Borphu-Khan. सो वी शुड अंडरस्टैंड, हमें ये समझना चाहिए कि आपका हु वाज लचित बोरफू खान. ओके, हु वाज लचित बोरफू खान? बेसिकली फ्रेंड्स, बोरफू खान वाज known for his leadership in the battle of Sarai Ghat in 1671. And in this battle, he attempt, also you can say ki Borphu Khan was known for his leadership in the battle of Sarai Ghat in 1671. And in this battle, or in which an attempt by Mughal forces to capture Assam was thwarted. Okay, so basically Lachit Borphu Khan faced the challenge from the Mughal forces. Mughal forces wanted to capture the Assam, and he single-handedly led it a vastly outnumbered Ahom forces. Ahom is also tribe. Okay, force to victory over a numerically superior of Mughal Empire. So basically, also you can say कि medieval times Mughal Empire was superior. Mughal Empire was superior. Okay, and also we can say कि Lachit Borphu Khan faced the challenge from the Mughal Empire, and also he you can say na कि on the battle you can say na कि of Sarai Ghat. This is not performing shares. Video आपको आ नहीं रहा है क्या? What happened? I hope कि ये सब जो है आपका प्लीज रिफ्रेश, आप रिफ्रेश करिएगा, सही हो जाएगा. सेशन जो है चल रहा है आपका. ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, सो नो प्रॉब्लम. मैंने आप लोग को अभी बताया कि लचित बोरफू खान यू कैन से कि he single-handedly led a vastly outnumbered Ahom force to victory over a numerically superior Mughal Empire, and his victory is honored with a gold medal given every year to the best cadet graduating from the National Defense Academy. National Defense Academy, NDA. Okay, NDA is very important, so you'll have to keep in the mind. Problem YouTube live, what is happening? The link is working. So now screen is visible now. बता दीजिएगा. सॉरी सॉरी. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है. थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था. ओके, इसी वजह से क्लास जो है शायद रुक गया होगा. तो नाउ प्लीज टेल मी कि स्क्रीन इज विजिबल और नॉट. ओके, तो प्लीज बता दीजिएगा. नाउ लेट्स मूव अहेड. आई एम गोइंग टू डिस्कस. ओके, कंटिन्यूशन.
So now I was discussing about the Lachit Borphukan. Okay, Lachit Borphukan is one of the most important personality in medieval times. Okay, in medieval India, and then also we'll have to understand that he was the Ahom warriors. Okay, and so I told you that Lachit Borphukan was known for his leadership in the Battle of Saraighat in 1671. In 1671, okay, in which an attempt by Mughal forces to capture the Assam, okay, capture the Assam also we can say, and he single-handedly, okay, led a vastly outnumbered Ahom force to victory over a numerically superior Mughal empire, okay, Mughal empire, and his victories honored with a gold medal, okay, what, with a gold medal given every year to the best cadet graduating from the National Defence Academy, graduating from the National Defence Academy. This is very, very important. You will have to understand. Now let's move ahead and let's discuss a new fact about the Ahom. Okay, Swagitka, I discuss a topic related to the Lachit Borphukan, and basically before 1 week, okay, our president visited Assam, and Assam government announced various projects related to Lachit Borphukan. Okay, and Lachit Borphukan, who was Lachit Borphukan, I told you he was known for his leadership in the Battle of Saraighat, in 1671, and which an attempt by Mughal force to capture Assam was thwarted, and he single-handedly led a vastly outnumbered Ahom force to victory over a numerically superior Mughal empire. And Lachit Borphukan's victory is honored with a gold medal given every year to the best cadet graduating from the NDA, National Defence Academy. National Defence Academy. So, what is the fact related to the Ahom kingdom? We should understand the facts related to the Ahom kingdom. This is very, very important. So now let's move ahead and let's discuss the facts related to the Ahom kingdom. Okay, basically, friends, the Ahom dynasty, okay, which was ruled from 1228 to 1826 and ruled the Ahom kingdom in present day Assam and India for nearly 598 years. So basically from northeast region, okay, northeast region is very, very important for your upcoming examination. Northeast region is very, very important for your upcoming examination, and you will have to understand, you will have to cover the various schemes, various projects related to the northeast. Okay, and basically this topic is in news, so maybe UPSC or state service may ask about the Lachit Borphukan, okay, ask about also you can say ki Ahom kingdom. So I told you ki Ahom dynasty ruled the Ahom kingdom, that means ki present day Assam, nearly for 598 years. And this dynasty, Ahom kingdom dynasty, was established by Sukafa, a son prince of Mong Mao, who came to Assam after crossing Patkai mountain. Okay, Patkai mountain. So you will have to understand about the Patkai mountain. Patkai mountain is also very, very important. Okay, you will have to keep in the mind. So do you know about the Patkai mountain? So Patkai or Patkai from a series of mountain in the Indo-Myanmar border. Okay, Indo-Myanmar border. This is very, very important. Indo-Myanmar border. Okay, Indo-Myanmar border. And also friends, Indo-Myanmar border falling in the northeastern Indian states of Arunachal Pradesh, Nagaland and Upper Burma region of Myanmar. And they were created by the same tectonic process that created the Himalayan in the Mesozoic. So I told you about the Patkai, okay, mountain also. So I told you ki Ahom dynasty, okay, was established by the Sukhapa, and Sukhapa was a son prince of Mongong, okay, Mong Mao, and who came to Assam after crossing the Patkai mountain. And I already मैंने आपको बता दिया Patkai mountain के बारे में. And the rule of this dynasty ended with the Burmese invasion of Assam and the subsequent annexion by the British East India Company following the Treaty of Yandabo in 1826. So rule of the Ahom kingdom, okay, came to an end when Burmese invasion of Assam, and then by the also you can say the annexation by the British East India Company,
And by the which treaty? Treaty of Yandabo. Treaty of Yandabo in 1826. Treaty of Yandabo in 1826. And in external medieval chronicles, the kings of this dynasty were called Asham Raja. And whereas the subject of the kingdom called the Chaopa or Swargadev. Okay, Swargadev. So please keep in the mind Chaopa or Swargadev. Okay, or Swargadev is a terms related to Ahom kingdom. Terms related to Ahom kingdom. Okay, and friends, there were two important battles. Battle of Alaboi. Okay, there were two important battles. So let's discuss the two important battle that is very, very important. We'll have to know. Okay, we'll have to understand. So two important battle. Now I'm going to tell you about the two important battle. Okay, so first is Battle of Alaboi, and Battle of Alaboi took place in 1669. बैटल ऑफ अलाबोई जो था वो आपका कब होता है 1669 ईस्वी में. 1669 में आपका बैटल ऑफ अलाबोई जो है वो आपका होता है बैटल ऑफ अलाबोई. So we should understand the you can say like facts related to battle of Alaboi. Okay, battle of Alaboi. Okay, what is Shan? I told you Shan, that means ki Ahom kingdom, that means this dynasty was established by Sukhapa. He was a Shan prince of Mong Mao. मतलब कि एक प्रिंस था मोंग माओ का. शान प्रिंस मीन्स की हेड, ऐसे भी कह सकते हैं कि हेड ऑफ द प्रिंस. ओके, या ऐसे भी कह सकते हैं कि वेरी फेमस प्रिंस, वेरी फेमस प्रिंस. So basically you will have to keep in the mind कि Ahom kingdom was established by Sukhapa. Okay, established by Sukhapa. He was a prince of Mong Mao, and he came to Assam after crossing the Patkai mountain. Okay, I already told you, so please keep in the mind. Now let's move ahead and let's discuss the important battles. I told you that there were two important battles. First battle is Battle of Alaboi. Okay, Battle of Alaboi. So in 1669, please keep in the mind, in 1669, Aurangzeb dispatched the Rajput Raja Ram Singh first to recapture territories on back by Ahom. So please keep in the mind. And the Battle of Alaboi was fought between the Ahom armed force and Mughal trespasser on 5th August 1669 in the Alaboi hills near Dadara in North Guwahati. So basically you will have to keep in the mind that Battle of Alaboi took place between the Ahom kingdom and Mughal emperor, and the Mughal emperor was Aurangzeb. Okay, so you will have to keep in the mind. Who was the Mughal emperor? Mughal emperor was Aurangzeb. And it took place in northern Guwahati. Now important battle, and the important battle is Battle of Sarai Ghat. It took place in 1671. Basically friends, the Battle of Sarai Ghat was one of the most significant warfares in medieval India. This is one of the most important battle of medieval India. Which one? Battle of Sarai Ghat. And Battle of Sarai Ghat जो था वो आपका किसके बीच होता है? Was a naval battle fought in 1671 between the Mughal Empire led by Kachwaha, King Raja Ram Singh first, and the Ahom kingdom led by Lachit Borphu Khan on Brahmaputra river at Sarai Ghat, Guwahati जो है असम. और यहीं पे आपका जो आपको पता ही होगा कि ब्रह्मपुत्रा रिवर इज द लाइफलाइन रिवर ऑफ द असम. ओके, वी कैन से. एंड होता क्या है, आप देखोगे कि जो बैटल ऑफ सराय घाट जो है, एक सराय घाट आपका लोकेशन है जहां पर कि असम में हम लोग कह सकते हैं. ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा. जस्ट अ मिनट. Sorry for technical problem. Okay, so this is the first class na on YouTube, so maybe okay, so sorry.
Now I was talking about the Battle of Saraighat, and Battle of Saraighat took place in 1671. Took place in 1671, and I already told you. Okay, no problem. We will not face any problem. So this is the first class. So due to the first class, maybe any technical problem. Okay, I am facing technical problem, but in upcoming class, we will not face. I will not face any technical problem. So Battle of Saraighat. The Battle of Saraighat was one of the most significant warfares in medieval India. I already told you. And the Battle of Saraighat was a naval battle, okay, fought in 1671 between the Mughal forces and Ahom kingdom, okay. You can say na कि an Ahom kingdom led by the Lachit Borphu Khan, led by the Lachit Borphu Khan. This is very important. And although workers of the Ahom army defeated the Mughal army, okay, and brilliant usage of terrain, clever diplomatic negotiation to buy time, and guerrilla tactics, psychological. Guerrilla tactics means, do you know, जो गुरिल्ला वॉरफेयर है अभी ये रशिया और यूक्रेन को लेकर भी, ओके, जो हम लोग बात करते हैं क्या होता है आपका न्यूज में गुरिल्ला वॉरफेयर मींस कि यू कैन से कि अटैक फ्रॉम द इनविजुअल हैंड, दैट मींस कि अटैक जो होता है छुप के जो अटैक किया जाता है, ओके. एंड the Battle of Saraighat was the last battle in the last major attempt by the Mughals to extend their empire into Assam. So Battle of Saraighat, you'll have to only keep in the mind what? The Battle of Saraighat was fought between the Mughal Empire versus Ahom Kingdom. And Ahom Kingdom leader was Lachit Borphu Khan. Okay. And the Mughals managed to regain Guwahati briefly later after the Borphu Khan deserted it, and the Ahom, you can say, wrested control in the Battle of, okay, Itakhuli in 1682 and maintained it till the end of their rule. This is very important. This is very important. So we have discussed the important, you can say, fight, important fight, important war. Okay. Very good evening, Jajati. राहुल, यस कि क्लास जो है आपका गूगल मीट से भी सकता है वे, लेकिन यूट्यूब जो है एक बहुत ही अच्छा टूल है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, नया कर सकते हैं. ओके, सो आई एम टेकिंग, यू कैन से ना कि क्लासेस फ्रॉम द यूट्यूब प्लेटफॉर्म. Now let's move ahead and let's discuss a new topic, and the new topic is very important for prelims examination and mains examination. You'll have to keep in the mind and you'll have to understand this topic with the detail. Okay, this topic is very important. So now let's move ahead and let's discuss about this topic. And I told you that this topic is very important and you'll have to understand, because refugee crisis is one of the most important topic due to the Russia-Ukraine war, also we can say. And basically friends, this topic is related to international relation. This topic is related to international relation, basically general studies paper 2. Okay, general studies paper 2 for UPSC mains examination. And we should understand why this topic is important. I already told you the context is Russia-Ukraine war, and also there were model laws on asylum, okay, and refugee that were drafted by the National Human Rights Commission, okay, that were drafted by the NHRC, National Human Rights Commission, okay, National Human Rights Commission decades ago, but not implemented by the government and needs to be revised by an expert committee. So the issue also assumes significance in the wake of Ukraine crisis and the flood of refugee, okay, and flood of refugee. We have already, you can say na, we know about the crisis, Ukraine crisis. We know about the also you can say war between the Ukraine and the Russia. And after the war, after the Ukraine crisis, refugee topic is very important. Refugee topic is very important. होगा सिद्धार्थ, मिल जाएगा आपको रिकॉर्डिंग, डोंट वरी. बिलो लाइन इज नॉट विजुअल, जानबूझ के मैंने उसे किया है, पहले डिस्कस कर लेते हैं फिर आप लाइन जो है देखिएगा. ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस द, यू कैन से ना कि देयर आर 3 important term. ओके, refugee, asylum. Okay, there are 3 important term: refugee, then there is asylum, okay,
asylum, and then next term is migrant. Next term is migrant. So we should understand one by one. Okay, इस तीनों को हमें समझना चाहिए कि आपका इसका मीनिंग क्या होता है. Basically, friends, who is the refugee? Refugee are person who are outside their country of origin for reasons of feared persecutions, conflict, generalized violence, or other circumstances that have seriously disturbed public order and as a result require international protection. सो रिफ्यूजी होते कौन है? जो अपने देश से बाहर होते हैं एक डर के कारण. उस डर में आपका प्रोसिक्यूशन हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, जनरलाइज वायलेंस हो सकता है, या कोई और परिस्थिति जिसके वजह से आपका पब्लिक ऑर्डर जो है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है और फिर उनको अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरत होती है. अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरत होती है. तो द रिफ्यूजी डेफिनेशन कैन बी फाउंड इन 1951 कन्वेंशन and regional refugee instruments as well as United Nations Human Rights Commission statute. So basically हम लोग कह सकते हैं कि रिफ्यूजी कौन होता है. मैंने आपको बताया कि रिफ्यूजी आर अ पर्सन who are outside their country of origin for various reasons or for reasons of feared persecutions. And India has welcomed refugee in the past. So please keep in the mind that India has welcome refugee in the past. Okay, India has welcomed refugee in the past, and on a date nearly you can say कि 3 lakh peoples they are categorized as refugee in India at present. अगर आप बात करते तो लगभग 3 lakh पोर्शन जो है आपका क्या है, जो हम लोग कह सकते हैं कि रिफ्यूजी है. रिफ्यूजी है अपने इंडिया में 3 lakh. एंड अच्छा, आप में से कोई मुझे ये बता सकता है कि अपने इंडिया में जो ज़्यादातर जो हम लोग बात करते हैं कि जो रिफ्यूजी है वो कहाँ से आते हैं? अपने इंडिया में ज़्यादातर जो रिफ्यूजी है कहाँ से आते हैं? ज़्यादातर जो रिफ्यूजी है, एनीवन कैन यू टेल मी? ज़्यादातर जो रिफ्यूजी है वो कहाँ से आते हैं? कोई कमेंट करके बता सकते हो फटाफट, क्विकली. Try to participate. Don't worry कि this class is on YouTube platform, so will not participate. We'll discuss. सारी चीजें करेंगे. सो जल्दी से आप लोग गेस करो और बताओ कि अपने इंडिया में ज्यादातर रिफ्यूजी कहां से आते हैं. सो द बल्क ऑफ रिफ्यूजी पॉपुलेशन इन इंडिया originates from वेरी गुड राहिल अब्बास खान बांग्लादेश, कानूचरण पाकिस्तान. अच्छा, पाकिस्तान भी है क्या? नहीं, पाकिस्तान नंबर में नहीं है तो उसको आप साइड कर. म्यांमार, वेरी गुड. ओके अंसारी जी. एंड देन सो फर्स्ट अगर आप बात करते हो रिफ्यूजी का तो हम लोग कहते हैं श्रीलंका, तिब्बत, म्यांमार एंड जो अफगानिस्तान. तो फर्स्ट इज श्रीलंका, देन तिब्बत, देन म्यांमार, म्यांमार एंड देन अफगानिस्तान. जो यहाँ से आपके बहुत सारे रिफ्यूजी जो है वो अपने इंडिया में आते हैं. So we have discussed about the refugee, meaning of the refugee. Now the next term is migrant. What is the meaning of the migrant? Let's understand the meaning of the migrant. Basically friends, migrant means कि while there is no formal legal definition. So first of all you will have to keep in the mind there is no formal legal definition of an international migrant. Migrant means कि when any person will move from one place to another place. तो ज्यादातर जो एक्सपर्ट है वो क्या कहते हैं कि इंटरनेशनल माइग्रेंट जो होते हैं कौन? हु चेंजेज हिज और हर कंट्री ऑफ यूजुअल रेजिडेंस irrespective of the region for migration or legal status. So generally we can say कि temporary movement of people is also known as the migrants. So temporary means we can say कि between the 3 and 12 months. अगर आपका लॉन्ग टर्म माइग्रेशन होता है तो उसे परमानेंट माइग्रेशन के रूप में भी आपका जाना जाता है. जो परमानेंट माइग्रेशन मतलब कि वी कैन से कि रेजिडेंस फॉर मोर देन 1 year. So generally I told you कि permanent migration and then temporary migration and migrant when people will move from one place to another place. Yes, also we can say कि Rahil Bangladesh is also Now, we should understand the meaning of next term, and meaning is
asylum seeker. So asylum seeker is a person who has left their country and is seeking protection from prosecution and serious human rights violation in another country, but who has not yet been legally recognized as a refugee and is waiting to receive a decision on their asylum claim. So seeking asylum is a human right. So first of all, you will have to keep in the mind that means कि everyone should be allowed to enter another country to seek asylum. बेसिकली वी कैन से कि असाइलम होता क्या है कि एक ऐसा पर्सन जो अपने कंट्री को छोड़ दिया है और दूसरे कंट्री का प्रोटेक्शन वो चाहता है, लेकिन उसे अभी तक रिफ्यूजी क्या है डिक्लेयर नहीं किया गया, उसे लीगली जो है रिफ्यूजी डिक्लेयर नहीं किया गया. ओके, सो यू विल हैव टू कीप इन द माइंड. So what the you can say na ki legal framework present in India? What are the legal framework is present in present in India? We should understand the legal framework. So basically, you can see here India is not a signatory to the 1951 UN Refugee Convention relating to refugee status or not its 1967 protocol. So basically, we can say that India did not recognize legally refugee because India is not the signatory of 1951 United Nations Refugee Convention, or you can say कि its protocols 1967 protocol. And then जो है आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा India is not a signatory. I told you, okay. And then refugee and asylum seekers were entitled to rights in Article 14, 20, and 21 of the Indian Constitution. So basically, Indian Constitution provides fundamental rights. Indian Constitution provides fundamental rights, and we have already discussed in any previous class. क्या आप मुझे बता सकते हो कि कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो एक्सक्लूसिवली आपके इंडिया के लिए अवेलेबल है? कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो एक्सक्लूसिवली आपका इंडिया के लिए अवेलेबल है? ओके, एनीवन कैन यू टेल मी कि which articles, which fundamental articles are exclusively available? Okay. For you can say people of India. जल्दी से कोई बता सकते हो कि कौन से आर्टिकल्स हैं जो आपका सिर्फ और सिर्फ इंडियन के लिए अवेलेबल है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स? एनीवन क्या बता सकते हैं आप लोग? कोई? किसी को नहीं पता? Yes, 15, 16, 19, 29 and 30. Yes, these articles are exclusively available, okay, available for Indians. जो ये आर्टिकल्स है यही आपका जो है सिर्फ और सिर्फ क्या है आपका एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है आपके इंडियन के लिए. और बाकी जो आर्टिकल्स है अगर आप बात करते हो उस सारे के सारे आर्टिकल्स आपके फॉरेनर्स के लिए भी अवेलेबल है. जो फॉरेनर्स होते हैं उनके लिए भी अवेलेबल होता है. ओके, सो वी कैन से कि फंडामेंटल राइट्स की अगर आप बात करते हो, अभी मैंने बताया कि असाइलम सीकर्स हो, रिफ्यूजी हो, उनको भी आपके आर्टिकल 14 जो है आपका 20 जो है 21 जो है ये सारे आर्टिकल्स उनको इंजॉय करने के लिए आपका मिलता है. उनको भी ये सारे आर्टिकल्स इंजॉय करने के लिए मिलता है. ओके, सो आई टोल्ड यू, सो प्लीज कीप इन द माइंड. नाउ लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स डिस्कस नेक्स्ट फैक्ट. ओके, जो नेक्स्ट फैक्ट है उसको हम लोग डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं. तो आप देखो कि जो नेक्स्ट फैक्ट है मैंने बता दिया कि आपका आर्टिकल 14, 20 एंड 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओके आर अवेलेबल फॉर द फॉरेनर्स also, are available for the foreigners also. So you will have to keep in the mind, you will have to understand these facts. Okay, you will have to understand. Now let's move ahead and let's discuss new important points for this topic. So basically friends, in India all foreign national in India all foreign national including refugee, asylum seekers and stateless person are governed by the provision contained in the Foreigners Act 1946. Foreigners Act 1946. Okay, 1946. So please keep in the mind. So basically also we can say ना कि in India basically ऐसे कह देते हैं कि foreigners are regulated in India by these acts. So first is Foreigners Act 1946. Second, Registration of Foreigners Act 1939, Passport Act 1920 and Citizenship Act 1955.
Citizenship Act 1955. So in India, all foreign national, including refugee, asylum seekers, and stateless person, are governed by the provision contained in Foreigners Act 1946. Okay, 1946, Registration of Foreigners Act 1939, Passport Act 1930, and Citizenship Act 1955. Citizenship Act 1955. Okay. So these are the acts. These are the acts for the regulation of the foreigner person. Yeah, foreign person. Okay. So what is the, you can say, like, important facts related to Foreigners Act 1946? We should understand the Foreigners Act 1946. Basically, the Foreigners Act 1946 gives central government the right to deport of a foreign national. So basically, these acts give right to deport, okay, right to deport of foreign national. Deport means अगर अपने इंडिया में इलीगल आ गया है तो उसको उस कंट्री में, जिस कंट्री का है, वहां पे डिपोर्ट कर देना. ओके. So basically 1946 Act gave right to the central government, to deport. Okay. एंड देन उसके बाद अगर आप बात करते हो, जो नेक्स्ट है उसमें आप देखोगे, एक है आपका पासपोर्ट एक्ट 1920. व्हाट? पासपोर्ट एक्ट 1920. सो अकॉर्डिंग टू द पासपोर्ट एक्ट 1920, okay, according to the passport act 1920, it is mandatory for anyone entering India through water, land or air to possess their passport, and also prohibits the entry of the person not possessing the documents. So registration of foreign act 1939, registration of passport act 1920, जो ये किस बारे में बताता है कि पर्सन शुड होल्ड अ पासपोर्ट, लीगल पासपोर्ट. ओके. अगर आप इंडिया में एंट्री करते हो, चाहे लैंड के द्वारा, चाहे वाटर के द्वारा या स्काई के द्वारा, तो आपके पास क्या होना चाहिए? यू शुड हैव लीगल डॉक्यूमेंट्स. लीगल डॉक्यूमेंट मीन्स की पासपोर्ट. लीगल डॉक्यूमेंट मीन्स पासपोर्ट. ओके. एंड देन नो नीड टू, ओके, कमेंट, पर्सनल कमेंट कोई नहीं करिएगा. सिर्फ यहाँ पे यू विल हैव टू ओनली स्टडी. ओके. वी कैन से कि जो है आपका स्टडी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, ओके, वही आपको कमेंट करना है, बाकी चीज़ें कमेंट नहीं करना है. ओके. नाउ लेट्स मूव अहेड, लेट्स डिस्कस द, मैंने आपको बताया कि जो पासपोर्ट एक्ट है उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया 1920. दैन जो है आपका फॉरेनर्स एक्ट 1946 हमने डिस्कस कर लिया. दैन है सिटीजनशिप एक्ट 1955. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. सिटीजनशिप एक्ट 1955. So basically, as per the Citizenship Act 1955, there is a definition related to illegal migrant. Okay, 1955 Act talks about the illegal migrant. इसी में आपको दिया है कि कैसे आपको सिटीजनशिप मिल सकता है, कैसे वापस लिया जा सकता है, ये सारी चीजें इसी में दिया हुआ है. ओके. So now मैंने बताया कि 1955 Act talks about the illegal migrant. So who is illegal migrant? Foreign national who enters India on valid travel documents and stay beyond their validity. That means कि अगर आप आए हो 20 डेज के लिए, आप रह रहे हो 20 डेज से ज़्यादा, सो यू आर इलीगल माइग्रेंट. आप क्या हो गए? आप इलीगल माइग्रेंट हो गए. ओके. नाउ उसके बाद एक और चीज़ें इसमें दिया गया है, उसको भी हम लोग को कवर अप करना चाहिए. चलिए तो पढ़ते हैं आगे और उसी को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. सो एक इलीगल माइग्रेंट कि आपका वैलिडिटी हो गया, उसके बाद भी आप रहते हो, या फॉरेन नेशनल हु इंटरेस्ट विदाउट वैलिड ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स. अगर आपके पास कोई वैलिड ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स नहीं है और आप जो इंडिया में आ जाते हो, सो आप क्या कहलाओगे? इलीगल माइग्रेंट कहलाओगे. इलीगल माइग्रेंट. So this is very very important. Okay, so Citizenship Act 1955 we have discussed. Also friends, while okay, क्या आप में से कोई मुझे ये बता सकता है कि अपने इंडिया में जो सिटीजनशिप मिलता है अकॉर्डिंग टू एक्ट 1955, या जो हम लोग कहते हैं कौन कौन से तरीके से सिटीजनशिप जो एक्वायर हो सकता है, कौन कौन से तरीका है जो सिटीजनशिप जो आप एक्वायर कर सकते हो? एनीवन कैन यू टेल मी? से कौन कौन से आपका, हम लोग कहते हैं ना कि जो वे है, जिस वे से आप सिटीजनशिप आप ले सकते हो,
बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक 1955 एक्ट, इसलिए मैं सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, सो फटाफट आप लोग को बताना चाहिए कि कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप जो है हम लोग कहते हैं कि सिटीजनशिप ले सकते हो। एनीवन? कोई नहीं? एनीवन? नहीं नहीं, सिटीजनशिप कैसे एक्वायर किया जा सकता है राहिल? यस, वेरी गुड, बाय बर्थ। आधार कार्ड इज करेक्ट। नो नो, आधार कार्ड करेक्ट नहीं है। विच वॉज अकर्ड बाय इंडिया बांग्लादेश वॉर। जो बांग्लादेश इंडिया बांग्लादेश का जो वॉर हुआ था उसमें एक्वायर होता है, वो सारी चीजें बात करेंगे। लेकिन अभी बताओ कि फोर वेज है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या 1955 एक्ट जो है वो फोर वे आपका बताता है। उसको याद रखने का एक बहुत ही सिंपल ट्रिक है। ओके, तो हम लोग कहते हैं एक ट्रिक क्या है आपको मैं बता दूं। सो ट्रिक है ब्रांड, BRAND। अब देखो क्या है। पी से बर्थ, ओके, आर से रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन, ए से एंड रख लो, ये एंड है, एंड एन से नेचुरलाइजेशन, नेचुरलाइजेशन, एंड डी से डिसेंट, जो हमारे पूर्वज हैं, डिसेंट। ओके, सो ये चार वे है जिसके द्वारा हम लोग कहते हैं कि आपका सिटीजनशिप हमें मिल सकता है, सिटीजनशिप हमें मिल सकता है। ओके, तो ये भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, सो यू विल हैव टू कीप इन द माइंड। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स डिस्कस अबाउट द 1955 एक्ट। मैंने बताया कि वाइल लॉ एंड ऑर्डर, ऑफ कोर्स एवरीवन यू नो कि आप सभी लोग को पता ही होगा कि आप देखोगे कि लॉ एंड ऑर्डर जो है एक स्टेट सब्जेक्ट है। लॉ एंड ऑर्डर इज ए स्टेट सब्जेक्ट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, but international relation and international borders are under the exclusive purview of the union government. And this has resulted in the variety of agency, both of the central as well as the state government, and related to having to deal with the refugee matters concerned with the law enforcement. And basically, friends, our Indian Constitution, Article 51 of DPSP says that the state shall endeavor to foster respect for international law and treaty obligation in the dealings of organized people with one another. And then, friends, in 2011, the union government circulated to all states and union territory a Stanford operating procedure to deal with the foreign national who claim to be refugee, So you'll have to keep in the mind. And then, friends, so in a single line, we can say that India does not have on its you can say a statutory law related to statutory provisions. Yeah, India. Okay, presently we can say that India is not force. You can say that India is not able to implement the international law related to what refugee. Okay, but India has a specific law to govern refugee. That means India has own specific law. Okay. So what are the challenges faced by the refugee? This is very important. We should understand what are the challenges faced by the refugee. Anyone, can you tell me? ब्रांड्स डिटेल मीनिंग श्योर ब्रांड। ओके, ये जो ब्रांड है एक आपका तरीका है कि कैसे अपने इंडिया में कि आप सिटीजनशिप ले सकते हो। तो बी से बर्थ, आर से रजिस्ट्रेशन, ए से एंड है, ठीक है, एंड से नेचुरलाइजेशन, डी से डिसेंट। ओके मनोज, या सो नाउ वी शुड डिस्कस कि व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय द रिफ्यूजी। जो रिफ्यूजी क्राइसिस की अगर बात करते हैं तो सो वी शुड अंडरस्टैंड the topics according to the means. So what are the challenges faced by the refugee? अगर आप लोग एक एक करके भी कमेंट करोगे, डी मीन्स व्हाट, डिसेंट बोलते हैं कि आपके पूर्वज, आपके दादा दादी पापा मम्मी इंडिया में रहे, वैसे भी आपको मिल सकता है। यस, लॉ एंड ऑर्डर, वेरी गुड। एनीवन, चलो जल्दी जल्दी से बताओ व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय द रिफ्यूजी। And this is very important topic for your upcoming examination.
internal security, quickly, anyone, can you tell me, which are being occurred in Odisha? Okay, what are the challenges? Employment, refugee के लिए employment, okay, we can say. जल्दी जल्दी से, ऐसे नहीं, फास्ट, जितना जल्दी हो सकता है. चांदीपुर एरिया, why are you not commenting, why are you not participating? So please ना, कि what are the challenges, रिफ्यूजी के challenges कौन कौन से हैं? Okay, I am going to tell you one by one, so please keep in the mind challenges. So limited access to quality education, limited, okay, first, uh, quality education, limited access to quality education, okay. Then second, you can say कि compromise mental health and threat of loss of childhoods, okay. So mental health and threat to childhood, threat to childhood, जो childhood है उसके ऊपर भी आपका threat होते हैं. Then separation from families and greater vulnerability, okay. Separation from family, separation from family, and also you can say कि refugee जो है हमेशा vulnerables जो है आपके रहते हैं. Shelter, education, language, economy, okay, very good. Human trafficking, very good. एंड देन जो है आप देखोगे शिफ्टिंग फैमिली डायनेमिक्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ओके. दैट मीन्स कि नेक्स्ट यहाँ पे लिख देता हूँ कि फैमिलीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, families and responsibility, and the next is isolation in host community, isolation in host community, okay. Sports, okay. then जो है लास्ट कंसर्न वर्क विथ रिफ्यूजी चिल्ड्रेन. So you can say कि illegal activities, chances of illegal activities, chances of illegal activities. So these are the major, okay, you can say कि challenges faced by the refugee in any country. Now, why India needs a refugee law? Can you tell me कि why India needs a refugee law? Why India needs a refugee law? We should discuss कि why India need a refugee law. India needs a refugee law. Why India needs a refugee law? Anyone, can you tell me कि क्यों भारत को जरूरत है आपका refugee law को लेकर के? What are the, you can say ना कि important points, important facts related to refugee law? जल्दी जल्दी से आप बताओगे. What are the, you can say कि why India needs a refugee law? भारत को क्यों चाहिए आपका refugee law? जल्दी से, quickly, फटाफट. Why India needs a refugee law? Internal security, okay. Quickly, जितना जल्दी हो सकता है फटाफट. Why India needs a refugee law? No one. Okay, so now I'm going to tell you why India needs a refugee law. Yes, transportation issue, okay, Priyadarshini. So you'll have to keep in the mind first of all, easy and effective management. What? Easy and effective management, easy and effective management, okay. easy और effective management हो, इसके लिए इंडिया को बहुत ही जरूरी है आपका रिफ्यूजी लॉ. मैनेजिंग लीडरशिप को मैनेज करने के लिए, मैनेजिंग लीडरशिप, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कोऑर्डिनेशन फॉर बेटरमेंट, कोऑर्डिनेशन
for betterment, coordination for betterment. You'll have to keep in the mind coordination for betterment. Okay, coordination for betterment. And then also you can say ki avoiding friction, avoiding conflict, avoiding conflict, कॉन्फ्लिक्ट को दूर किया जाए, इसके लिए भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ना, अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट. देन ऑल्सो यू कैन से कि प्लेटफॉर्म फॉर डायलॉग, फाइंडिंग द राइट बैलेंस. ओके, नो नीड टू राइट, सो यू विल हैव टू कीप इन द माइंड. यस, अगर हम लोग बात करते हैं तो massive dangerous, okay, very good, so very good, so this is very very important to regulate, to manage the, you can say ki illegal migrants. And then for unity, yeah, very good, Suroj, ki for unity, this is also very very important, very good points. Okay, now let's move ahead. We have discussed the important topics, refugee topic, and this is very very important topic, okay, for upcoming examination. Now let's move ahead and let's discuss a new topic, and new topic is also important topic for your upcoming examination. So what topic is India United Arab Emirates free trade agreements and its significance, okay. So basically this topic is related to General Studies paper 3 and also General Studies paper 2. So first of all, this topic is related to General Studies paper 3 and General Studies paper 2 international relation. So we should understand the, first of all, the context. What is the context? So India and the United Arab Emirates have signed the Comprehensive Economic Partnership Programs. What? CEPA, Comprehensive Economic Partnership Program, Comprehensive Economic Partnership Program. Okay, basically India and UAE have entered into a FTA, free trade agreement. Okay, you can say कि FTA, free trade agreement, FTA, free trade agreement, by signing the CEPA in February 2022. And the FTA deal was signed in a virtual summit headed by the Indian Prime Minister Narendra Modi and the Crown Prince of Abu Dhabi, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. And this agreement will boost bilateral trade between the UAE and India. Bilateral trade between the UAE and India. So we should understand ki what is the facts related to the CEPA between India and UAE. First of all, friends, in a bilateral trade आपका क्या होता है, पहला PTA, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, फिर जो है मोस्ट फेवर नेशन होता है, उसके बाद FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फिर जो है आपका कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप होता है. ओके, सो ऐसे सीक्वेंस जो है उसको यू विल हैव टू कीप इन द माइंड. नाउ so, and do you know friends, it is a, okay, CEPA between India and UAE. So first of all, it is a free trade agreement that will take effect from 1st June 2022. Okay, from 1st June 2022. And then also we can say free trade agreement. What is free trade agreement? So free trade agreement, okay, it is an agreement between two or more nations to eliminate tariffs and non-tariff barriers on a significant amount of imports from partner countries. So what is free trade agreement? Free trade agreement means, let's take example of India and America. Okay, so if there is a free trade agreements, that means India will, okay, give concession to American goods or America will give concession to Indian goods. Okay, so basically it is an agreement between two or more nations to eliminate tariffs and non-tariff barriers. That means for smoothing the bilateral trade, okay, barriers on a significant amount of imports from partner countries. And that means ki services, investment, economic cooperation may all be covered by the free trade agreement. Okay, and it is India's first free trade agreement in the last 10 years and first such deal after the Narendra Modi became the Prime Minister of India. So this is one of the most important FTA. बेसिकली फ्रेंड्स कि जो लास्ट मेजर एफटीए जो हुआ था वो जापान के साथ 2011 में हुआ था. एंड इंडिया यूएई क्वालिफाई एज एन अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट. अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट मींस इट इज अ न्यू एग्रीमेंट. ओके, इट इज अ न्यू एग्रीमेंट, अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट. एंड फ्रेंड्स, अंडर, okay, an early harvest agreement, two trading partners significantly reduce
or eliminate custom duties on a limited number of goods and relax norms for promoting trade in services. Early harvest programs, early harvest agreement means I already told you. Early harvest, agreement means the two trading partners, significantly reduce or eliminate custom duties on a limited number of goods and basically relax norms for promoting trade in services. And this FTA is the fastest trade deal to have been negotiated till now. ये सिर्फ और सिर्फ आपको 88 डेज में हो गया इंडिया यूएई का, ओनली इन 88 डेज, ये फास्टेस्ट बोला जाता अभी तक का. एंड देन ऑल्सो यू विल हैव टू कीप इन द माइंड कि अगर आप बात करोगे तो हम लोग को जो चीज़ें समझना है कि द whatever we have discussed ki FTA agreement between India and UAE, this agreement not only covers goods and services traded between the two countries but also many other products. So hence this deal has been termed as a new age FTA. So please keep in the mind new age FTA, new age FTA. Okay, new age FTA. That means it only you can say it cannot only cover the you can say goods. It covers also you can say various services, various goods, and many other products. Okay, hence it is known as the new age FTA. New age FTA. And then the CEPA, Comprehensive Economic Partnership. Okay. With the refugee childhood. Yes, of course, Jayashree, we have discussed. Now let's move ahead. The CEPA is one of India's new age FTA because it covers topics that have formerly been unexplored, and this contain chapters on government procurements, digital trade, and the intellectual property rights, and all of which are extensive and separate. Okay, so this is very, very important. You will have to understand. Now. And then friends, it also accommodates provisions for cooperations, then cross-border data transfers, and harmonization of digital standards with the focus being on digital trade. And for the first time in free trade agreement, there is a separate chapter of small and medium enterprises. So basically, you can say in India UAE free trade agreement, there is also chapters related to small medium enterprises. Okay, and now let's move ahead and let's discuss the important fact from day one of the agreement coming force. 90% of India's current export to the UAE will have immediate market access at zero duty. And duties on additional 9% of India's exports are set to reduce to zero within the next 5 to 10 years. No need to go in detail. Okay. And basically, friends, you can say this agreement between the UAE and India is likely to benefit about $26 billion worth of Indian shipments that are currently subjected to 5% import duty of the UAE. And the major beneficiaries of this would be you can say there is gems and jewelry, textile sectors, engineering products, and pharmaceutical exports. And then friends, there is also separate annex or separate chapters on pharmaceutical. Okay, no need to go in detail. And then friends, now let's move ahead and let's discuss the important facts related to you can say India and UAE. Basically, friends, UAE is the third largest partner of India after China and USA. So UAE is the third largest partner. Okay, UAE is the third largest partner. Okay, third largest partner or trading partner of India after China and USA. Okay, USA. And then also, friends, we can say UAE, United Arab Emirates, has established itself as a major economic hub, not just in the Middle East, West Asia region, but also globally. Okay. And as a part of GCC, Gulf Cooperation Council, UAE can help in finalizing the FTA between India and the Gulf Cooperation Council.
So you will have to prepare the Gulf Cooperation Council, because Gulf Cooperation Council is very, very important, and you will have to prepare, you will have to know, because due to the oil prices, okay, due to the oil prices, Gulf Cooperation Council, okay, Gulf Cooperation Council is very, very important, and you will have to prepare. So now I'm going to tell you the few facts related to the Gulf Cooperation Council, okay. So please keep in the mind. Basically, friends, also we can say that Gulf Cooperation Council, it was established by an agreement which was concluded in 1981. GCC, Gulf Cooperation Council, it was established in 1981, okay, among Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, and UAE. And in view of their special relation, geographic proximity, similar political system based on Islamic beliefs, joint destiny, and common objectives. So the structure of the Gulf Cooperation Council consists of the Supreme Council. Supreme Council is the highest authority. Then the Ministerial Council, okay, and the Secretariat General. And where is Secretariat? Secretariat is located in Riyadh, okay, Saudi Arab. So basically, you can say Secretary, okay, is located in Riyadh, okay, Saudi Arab. Saudi Arab. So please keep in the mind. And then it is a Gulf Cooperation Council is a political, economic, social, and regional organization according to its charter. According to its charter. Okay. So अगर गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की अगर बात करते हैं तो कुवैत है मेंबर, बहरीन है, सऊदी अरब है, यूएई है, ओमान है. Okay. So please keep in the mind. And India relation with Gulf Cooperation Council is very, very important. Okay. Basically, there is a political relation, economical relation, security relation. So आप लोग को सारी चीजें जो है प्रिपेयर करना पड़ेगा. Okay. So try to prepare. This is very, very important. Now let's move ahead and let's discuss the important facts. The India-UAE relation have become a focal point of India's extended neighborhood and look-west policy in the region. And this deal with the further boost the relation between the two countries, relation between the India and UAE, India and UAE. Okay. So now, anyone, can you tell me what are the importance of the West Asian countries for India? What are the importance of West Asian countries for India? क्या आप बता सकते हो कोई भी? क्या इंपॉर्टेंस है वेस्ट एशियन कंट्री का? जल्दी से बताओ क्या इंपॉर्टेंस है. व्हाट आर द इंपॉर्टेंस? व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ वेस्टर्न एशियन कंट्री फॉर इंडिया? इंडिया के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंस है आपका पश्चिमी एशियाई देशों का? नॉट अ सिंगल वन. जल्दी से बताइए. What are the importance? Yes, oil. Okay, Rahil. Their support is important for India to become a permanent member of UNSC. Very good. Next. Oil refineries. Okay. Oil refineries. Okay. Next. We have already discussed about the UAE. मैंने बताया कि पॉलिटिकल रिलेशन है, इकोनॉमिकल रिलेशन है, सिक्योरिटी का रिलेशन है. सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंस? क्या इंपॉर्टेंस है आपका वेस्ट एशियन कंट्रीज का? डिफरेंस. ओके.
मिनरल रिसोर्सेज, ओके, पॉलिटिकल, वेरी गुड। चलो, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं आप लोग को पॉइंट बता रहा हूँ, फिर आपको मेंस का आंसर लिखना होगा, ओके। सो पॉइंट इज फर्स्ट ऑफ ऑल, एनर्जी एरिया ऑफ कॉपरेशन की अगर बात करते हैं कि 70% ऑफ इंडियाज इंपोर्टेड एनर्जी नीड्स कम फ्रॉम वेस्ट एशिया, ओके, ये थोड़ा ध्यान में रखना है। दैन इंडियन डायस्पोरा, presence of the Indian diaspora, this is very very important, okay. Yeah, very good. Fight against terrorism, Priyadashini Mohapatra, the West Asian countries supply bulk of oil and natural gas, promote trade and investment, very good. Develop the educational purpose, very good, Jayashri. So now I'm going to tell you कि first of all the you can say ना कि energy is very very important, okay. So area of cooperation में अगर आप बात करो कि आपका कौन सा है, पहला जो है आपका energy is very very important. सेकेंड पॉइंट की अगर आप बात करते हो तो सेकेंड पॉइंट है इंडियन डायस्पोरा, प्रेजेंस ऑफ इंडियन डायस्पोरा, ओके। एंड हमें क्या मिलता है कि इंडियन डायस्पोरा से रेमिटेंस, ओके, डायस्पोरा, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रेमिटेंस। जो रेमिटेंस होते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। दैन उसके बाद अगर आप बात करते हो कि इंपॉर्टेंट फॉर द काउंटर टेररिज्म एंड रेडिकलाइजेशन, important for the counter terrorism, okay, terrorisms and radicalization, okay, radicalization, so please keep in the mind. वेरी गुड प्रियदर्शनी, आपने सही बोला था, फिर डिलीट कर दे, कोई बात नहीं। देन जो है अगर हम लोग बात करते हैं कि कोऑपरेशन इन डिफेंस सेक्टर, कोऑपरेशन इंडिया और ओमान का आप देखोगे अभी भी न्यूज में है, आज ही के करंट अफेयर के स्लाइड्स में भी मैंने रखा हुआ है कि आपका बायलैटरल एक्सरसाइज, ओके। सो डिफेंस कोऑपरेशन, द नेक्स्ट इज डिफेंस कोऑपरेशन, सो प्लीज कीप इन द माइंड, नेक्स्ट इज डिफेंस कोऑपरेशन। एंड देन उसके बाद अगर आप बात करिएगा तो हम लोग बात कर सकते हैं और कि जो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि इंडिया ईरान का रिलेशन, या यूएई का रिलेशन, या सऊदी अरब का रिलेशन, या इसराइल का रिलेशन, इसराइल पैलेस्टाइन का के फलस्तीन का रिलेशन, दैन जो है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ जो हमारा रिलेशन है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इंडिया का जो वेस्ट एशिया पॉलिसी है, वेस्ट लुक वेस्ट पॉलिसी भी इसे हम लोग कहते हैं, सो आपको भी ध्यान में रखना होगा। एनर्जी सिक्योरिटी बता दिया, सिक्योरिटी ऑफ इंडियन कम्युनिटी डायस्पोरा मैंने बता दिया, टू काउंटर रेडिकलाइजेशन हो गया, एंड इट इज द गेटवे टू सेंट्रल एशिया, ओके। जो वेस्ट एशिया है इट इज गेटवे, गेटवे, ओके, गेटवे फॉर सेंट्रल एशिया, गेटवे फॉर सेंट्रल एशिया, गेटवे फॉर सेंट्रल एशिया, यू विल हैव टू कीप इन द माइंड। Yes, to counter China's monopoly, very good, very good, okay. Then आप देखोगे कि it is very very important, you can say ना कि related to geostrategic importance to reduce the influence of China in West Asia and Arabian Sea. China is continuously making inroad to the West Asia through One Belt One Road initiative, okay, one sided to Pakistan, okay, very good. So this also you can say कि geostrategic important, what जियो स्ट्रैटेजिक, ओके, इंपोर्टेंट, सो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। सो वी हैव डिस्कस द इंपोर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू, यू कैन से ना कि व्हाट आर द इंपोर्टेंस ऑफ सेंट्रल एशिया, सॉरी वेस्ट एशियन कंट्रीज फॉर इंडिया, वी हैव डिस्कस। नाउ लेट्स कम टू द मेन पॉइंट। नाउ द जो मेन पॉइंट है वो आज का, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So what is the main important point? So let's move ahead. Okay. So first is question. Now let's start. Okay. Sorry, I'm going to give you the mains question. You'll have to write your answer. Okay. इसके बाद जो next topic है उसको हम लोग को discuss करना है, and you'll have to write and you'll have to forward. तो आप लोग को फॉरवर्ड भी करना है, ये नहीं कि यूट्यूब पे क्लास हुआ तो आंसर राइटिंग के पैटर्न जो हम भूल जाएंगे, नहीं, हमें डिस्कस करना है, ओके। सो क्वेश्चन इज ओके, सो फटाफट आप सभी लोग जो है क्वेश्चन लिखिएगा, ओके। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूक्रेन रशिया वॉर, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ present, in the context of present Ukraine Russia war, in the context of present Russia war, what are the importance of West Asian countries for
Indian economy in the context of present Ukraine Russia war, comma, what are the importance of West Asian countries for India या for Indian economy, for Indian economy. You will not have to move anywhere, you will have to wait for this session. आपको छोड़ के नहीं जाना है, अभी छोड़ के नहीं जाइएगा. ओके आप ऐसे ही रहने दीजिए. जैसे आपका आंसर हो जाता है कमेंट कर दीजिएगा सर कंप्लीटेड, एंड यू विल हैव टू राइट ओके दिस क्वेश्चन इन 150 वर्ड्स, 150 वर्ड्स 10 मिनट्स. आपको 10 मिनट का मैं टाइम देता हूँ और विद इन 10 मिनट्स मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, मैं आप लोग के कमेंट को देखता हूँ. तो अब आप लोग को अपने ब्लैंक जो पेज है निकाल लेना है. क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया होगा एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ओके सबसे पहले ये बताओ कितने लोग आंसर लिखने जा रहे हो, कमेंट करो कि सर मैं, कमेंट करो देखता हूं कितने लोग, आज ये भी पता लग जाए कि लाइव यूट्यूब पे भी कितने लोग आंसर लिखने जा रहे हैं. कितने लोग अभी आंसर लिखने जा रहे हैं. क्वेश्चन मैंने बताया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूक्रेन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रेजेंट यूक्रेन रशिया वॉर, व्हाट आर द इंपोर्टेंस ऑफ वेस्ट एशियन कंट्रीज फॉर इंडियन इकोनॉमी. क्वेश्चन लिखना है ब्लैंक पेज पे. कितने लोग लिखने जा रहे हो कमेंट करो फटाफट, तब मैं आपका बोलूंगा टाइम स्टार्ट्स. और आपको सेशन छोड़ना नहीं है ये भी मैं बता दूं. इसके कमेंट नहीं आ रहे. क्वेश्चन है जयश्री कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रेजेंट यूक्रेन रशिया वॉर, कॉमा, व्हाट आर द इंपोर्टेंस ऑफ वेस्ट एशियन कंट्रीज फॉर इंडियन इकोनॉमी. ओके जयश्री आप लिखने जा रहे हो, जयश्री नायक. ओके और किसी का कोई कमेंट नहीं आने वाला, आंसर नहीं लिखने वाला आप लोग. दैट मीन्स यू आर नॉट एबल टू राइट द आंसर. सो व्हाट इज द बेनिफिट. मैंने आप लोग को इतना डिस्कस किया, आपके स्लाइड पे ही है देखो लिखो, लिखा हुआ अभी कि व्हाट आर द इंपोर्टेंस. अब इतना हिंट दे दिया, इतना पॉइंट्स दे दिया, एंड आफ्टर दैट इफ यू विल नॉट राइट द आंसर, इफ यू विल नॉट कमेंट, ओके दिस इज नॉट गुड. You are preparing for civil service examination, and if you are preparing for civil service examination you will have to deliver, you will have to participate. Okay so let's start. Okay writing your answer and your time starts now. Your time starts now. You have 10 minutes. और सेशन नहीं छोड़िएगा प्लीज.
Rahil, if you have completed, you can forward me. Okay. Please forward. I will evaluate. No, you'll have to forward your answer. You have written on blank page. You have only 4 minutes left. आप लोग के पास केवल अब 4 मिनट है टाइम के हिसाब से. ओके, तो ट्राई टू कंप्लीट. जल्दी जल्दी से कंप्लीट करिएगा फटाफट. राहिल, वॉट एवर यू हैव ओके रिटन, प्लीज फॉरवर्ड मी. ओके, हैव यू डन? कोई नहीं, आप लोग बोलोगे सर 2 मिनट अभी और भी है. नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम, बट try to finish as soon as possible. You'll have to write your answer 150 words within 10 minutes. Okay, तो 10 मिनट्स में आपको कंप्लीट करना है क्विकली, फटाफट. ओके. लास्ट 1 मिनट. लास्ट 1 मिनट.
Okay, your time completed. Okay, now let's move ahead. Let's discuss a new topic, and new topic is very important topic for the mains examination and also for the prelims examination, because in prelims examination you will may get a question from this topic. So what is the topic? Topic is positive secularism in India. Positive secularism in India. So first of all, we should understand that this topic is related to polity and governance. Polity and governance. This topic is related to polity and governance, paper 2. Okay. What is the context? We should understand the context. First of all, let's understand the context. Argument made in the Supreme Court of India by senior advocate Devdutt Kamath, stating that India's secularism is positive in nature. What is the meaning of positive in nature? We should understand. Okay. So let's move ahead and let's discuss the first of all background. What are the backgrounds? What is the backgrounds of this secularism topics? Basically, friends, there was a petition, and petition has been made in the Supreme Court of India against the decision of colleges in Karnataka banning hijab. Karnataka banning hijab. Already you know, okay, hijab is in news, so this topic is very important. Okay. On counter for the petitioner stated in Supreme Court that because India follow positive version of secularism, it is important for the state to protect the religious right of the citizen. Religious rights of the citizen. We should understand the analysis portion of this topic. Okay, analysis portion of this topic. Basically, friends, our preamble. Preamble. What is the source of the preamble? कहाँ से हमने preamble लिया है? Anyone? Can you tell me? Could you tell me? What is the source of the preamble? Preamble का source है क्या? कहाँ से हमने preamble लिया है? Anyone? Can you tell me? What is the source of the preamble? कहाँ से हमने preamble लिया है? Anyone? Anyone? कोई भी फटाफट क्विकली कोई भी बता दो. व्हाट इज द सोर्स ऑफ द प्रियम्बल? प्रियम्बल हमने कहां से लिया है? जल्दी जल्दी से, जितना फास्ट हो सकता है फटाफट बता दीजिए. कोई नहीं, किसी का कमेंट. ओके, वेरी गुड अंसारी जी. या सोर्स इज अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन. तो हमने कहां से लिया है? अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है. सो प्लीज कीप इन द माइंड. ओके, जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल हमने कहां से लिया है? अमेरिका से. वी हैव टेकन फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन. वी हैव टेकन फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, वेरी गुड. नाउ also, the preamble of Indian Constitution aims to constitute India as a sovereign, socialist, democratic republic. Socialist, okay, sovereign, socialist, democratic republic. But do you know, in original Constitution, these term SSI was not the part. SSI मतलब क्या? SSI मतलब कि also you can say कि secular. Then also we can say ना कि socialist and integrity. ये टर्म तो भाई ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था ही नहीं, तो क्या जरूरत आन पड़ी थी? क्यों जरूरत हो गई? जरूरत हो गई कि इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, अपना रिजर्वेशन लगा रही थी, जो मन हो रहा था कर रही थी, है ना. तो उन्हें लगा कि ये वर्ड भी हमें ऐड कर देना चाहिए. कौन से? SSI, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, जो कि अपने प्रियम्बल में ऐड कर दिया गया. ओके. And these terms, socialist, secular, and integrity, was added by the 42nd Constitution Amendment Act. 42nd Constitution Amendment Act, what? 1976. 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे ऐड कर दिया गया. ओके, वेरी गुड. नाउ लेट्स मूव अहेड. And now we should understand that the whole Constitution is summarized in the preamble. Preamble is the yardstick of the Constitution. Preamble is the also you can say कि identity card of the Constitution. कितने सारे preamble is the mirror of the Constitution. Okay, ये सब आपने पढ़ा होगा. And the arrangement of the words in the preamble is also very significant for the Indian society, because Indian society is a multi-religious society, and it is having different caste, religion, along with the several religion diversification.
So all these are diverse factor in some way or other, and if not handled carefully, then can cause a threat to the unity and integrity of the nation. Unity and integrity of the nation. So we should understand what is the meaning of the secularism. We should understand the meaning of the secularism. Anyone, can you tell me what is the meaning of the secularism? Sorry. Meaning of the secularism. Anyone, can you tell me? Could you tell me what is the meaning of the secularism? क्या होता है ये धर्मनिरपेक्षता? बट अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में धर्मनिरपेक्षता नहीं है, पंथ निरपेक्षता है भाई. क्या होता है ये पंथ निरपेक्षता? मुझे नहीं पता क्या होता है पंथ, क्या होता है धर्म, ये सब क्या आप बता सकते हो, मुझे समझा सकते हो कि सर ये होता है पंथ निरपेक्षता? एनीवन, आप समझा सकते हैं? अंसारी जी बता सकते हो क्या? चलो मैं बताता हूँ. व्हाट इज सेकुलरिज्म? भाई सेकुलरिज्म क्या होता है? द डेफिनेशन जो है सेकुलरिज्म का, अगर आप बात करते हो, दैट केम अप आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड essentially mean that the state means also can say politics, state will maintain distance from religion. And this was the result of people of Europe and more especially the people of France not wanting to be governed by the dictates of the church in all aspects of life, including politics. So, in the Western society, therefore, religion is an independent aspect of life which is considered to be outside the influence of politics. And this is idea of secularism is termed as the negative secularism. Basically, in Western India, there is negative secularism. That means कि no activity will be done by the government. कोई भी activity सरकार के द्वारा नहीं किया जाए. किसमें? In the field of religion, in the field of promotion of religion, in the field for the betterment of the religion. Okay, so it is known as the negative federalism. It is known as the negative federalism. Okay, but friends, this कहते ना हमारा तो इंडिया ही है, अपने इंडिया का तो सब कुछ अलग ही होता है. इंडियाज वर्जन ऑफ सेक्युलरिज्म, अपने इंडिया का अलग से ही एक वर्जन है भाई. जो भी कहीं नहीं मिले वो इंडिया में मिलेगा. डोंट वरी, जो कहीं नहीं मिले वो इंडिया में मिलेगा. ओके, so India's versions of secularism. What is the India's version of secularism? India version of secularism, one of the other hand, believes in the Vedic concept. Vedic concept means called Sarv Dharm Sambhav. Okay, so basically India believes in Sarv Dharm Sambhav. सर्व धर्म स्वभाव. ओके, तो बेसिकली जो मैंने आपको बताया, अगर आप बात करते हो कि सर्वधर्म स्वभाव का मतलब क्या होता है कि स्टेट विल बी एट, ओके, यू कैन से कि स्टेट, दैट मीन्स कि स्टेट विल नॉट हैव एनी रिलीजन, बट स्टेट कैन डू वर्क फॉर द betterment of the religion, betterment of the religion. Also we can say कि that Indian state is not atheist and believes in existence of religion, though it does not favor any particular of religion. An Indian constitution following the concept of the Sarv Dharm Sambhav, and it places the responsibility of defending the religious rights of the citizen of India on the Indian state. Basically article 29 and 30, religious right, talked about the religious rights. Okay, and also we can say that Indian secularism is known as the positive version of secularism. Indian constitution, yeah, also you can say Indian secularism is known as the positive version of the secularism. So how is the above debate relevant to the current petition? Basically, in the current petition, revocation of order banning hijab is okay, colleges is doubt, and according to the petitioner, wearing hijab is an essential religious practices whose defense falls upon the Indian state, including the Supreme Court. Okay, do you know na कि in India Constitution talks about the freedom of religion in Indian Constitution. So can you tell me the articles related to the religious, you can say na, कि which of the following articles talks about the religious matters? अपने इंडिया में कौन से आर्टिकल्स है? बेसिकली इफ यू टॉक अबाउट द फंडामेंटल राइट्स, कौन से आर्टिकल्स है?
क्या बता सकते हैं आप अपने इंडिया में कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो आपका किससे बात करता है? वो आपका जो है बात करता है किससे? रिलीजियस, या हम लोग कहते हैं रिलीजन से रिलेटेड। एनीवन एनीवन, फटाफट फटाफट क्विकली जल्दी से कमेंट कर दो, फटाफट जितना जल्दी हो सकता है। आप लोगों ने शेयर नहीं किया था ना सेशन, मुझे पता है आप लोगों ने शेयर नहीं किया था, आप लोग शेयर कर देना चाहिए था। कम से कम बच्चे को जोड़ो, और क्या चाहिए भाई, डिस्कशन होगा, मजा आएगा। 25 to 28 talks about the right to religion of freedom. Okay. Yes, also we can say कि Article 29 and 30 cultural and educational rights of minorities we can say. Okay. Uh, Basically Article 20, sorry, cultural and educational rights 29 and 30. But Article 25 to 28 directly related to the rights of the religion. And Article 14 to 60 also prohibit discrimination against any citizen on the grounds of the religion. Okay, Article 14, 15, 16. Oh, also we can say very good. Yes, Sri Swagitka, very good, very good. Okay. Now, so we have discussed about the positive secularism. So I told you कि positive secularism in India, negative secularism in Western state. Western state. Okay. So this is very very important. You will have to keep in the mind. Now, फ्रेंड्स द नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम्स, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे टॉपिक्स है। ओके, सो यू विल हैव टू गो थ्रू द इंटेंशन है कि स्लाइड्स, आपको स्लाइड से गो थ्रू होना है, आपको चेकआउट करना है। एंड आफ्टर दैट इफ यू विल फेस एनी प्रॉब्लम, ओके, आई विल शेयर द स्लाइड्स, ओके, एंड यू विल गेट द स्लाइड एंड यू विल हैव टू मेक योर ओन नोट्स, ट्राई टू मेक योर ओन नोट्स एंड you will have to go through the all of these topics। बहुत सारे टॉपिक्स जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड है, जो मेंस ओरिएंटेड है, और कुछ टॉपिक्स जो मैं मेंस ओरिएंटेड जरूर डिस्कस करता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए काफी हो, क्योंकि 2 hours इज नॉट सफिशिएंट, यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, तो 2 hours इज नॉट सफिशिएंट, आप लोग को पता ही होगा कि 2 घंटे में हम लोग 1 week का करंट अफेयर डिस्कस नहीं कर सकते हैं। तो जो भी मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है, जहां से आंसर राइटिंग हो सकता है, डिस्कस हो सकता है, वो मैं कवर करता हूँ। और बाकी चीजें मैं स्लाइड में कवर करता हूँ। प्लीज गो थ्रू इट एंड इफ यू फेस एनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, ओके, फील फ्री टू आस्क। मैंने आप लोग को अपना कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुई है एवरीवन। मुझे लगता है कि सभी लोग के पास मेरा कॉन्टेक्ट नंबर होगा, है ना। तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई भी हो, तो फील फ्री टू आस्क, रीच, दैट मीन्स कि यू कैन सेंड मी द मैसेज, ओके, एंड ऑल्सो यू कैन कॉल, बट यू विल हैव टू, क्योंकि मैं बहुत बिजी रहता हूँ, तो ये नहीं बोलोगे अपॉइंटमेंट लेना, थोड़ा सा परमिशन ले लेना कि सर मैं कॉल करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आप यू कैन, ओके। बट आप लोग को पहले गो थ्रू होना है टॉपिक से। अगर आप क्वेश्चन मुझसे पूछोगे तो पहले मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ये टॉपिक क्या था, क्या आपको पता है, देन आफ्टर दैट आई विल रिप्लाई, ओके। तो दिस इज द गुड वे। एंड ऑल्सो जब भी मैं सेशन में जुड़ूँ, जब भी आपको लिंक अगर मिले, तो आप सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। देखिए, बिकॉज जो ये करंट अफेयर है, करंट अफेयर जो है ये मैं नहीं बोला सकूँ, क्योंकि प्लीज इसको सभी के लिए ओपन रखिए, ओपन फॉर ऑल, सभी लोग जुड़ सके, ठीक है। मैं भी शेयर करूंगा, आप लोग भी शेयर करो, जिससे कि और भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ पाए, ठीक है। जहाँ पे हमारा कंपटीशन हो, जहाँ हम लोग डिस्कस कर सके, एंड ऑल्सो डिस्कशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, ओके। So anyone, do you have any suggestion, or please tell me about your views about today class one by one। सभी लोग, आप लोग बताते चलो कि कोई प्रॉब्लम है या आप क्या सोचते हैं आज को क्लास के लेकर के, एक एक करके कमेंट करते चलिएगा। जितने लोग जुड़े हुए हैं प्लीज आप लोग कमेंट जरूर करिए, मुझे जानना है, ठीक है। शुरू में टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ, सॉरी फॉर दैट, ओके। लेकिन आप बताओ जो टॉपिक डिस्कस किया सफिशिएंट लगा, अच्छा लगा, नहीं लगा, दैट मीन ओवरऑल कैसा लगा क्लास आप लोग को। प्लीज आप लोग कमेंट करिएगा जरूर, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। जब तक आप कमेंट नहीं करो मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा सेशन। प्लीज कमेंट करिएगा फटाफट, क्विकली। स्वागत करें, मैं पोस्टल व्यू सर, मीट ऐप इज बेटर फॉर डिस्कशन, यस आई नो दैट। या वहाँ पे होता है, हम लोग जो है ऑडियो में कर सकते हैं, वीडियो में कर सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अभी क्लास का ओवरऑल ओवरऑल बताओ, क्लास कैसे लगा स्वागत।
प्लीज टेल मी, कमेंट करिए फटाफट, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट. या आई नो दैट कि सुभद्रा का गूगल मीट अच्छा है, आई नो दैट. ओके, बट क्लास का फीडबैक दो ना. दिस क्लास informative for us. Thank you so much, Rakit Sahuji. Thank you so much. I just say you are the best ever, sir. Absolutely. Thank you so much for your best session. Also, your classes was fabulous. Thank you so much. Thank you so much, Jayasri Nayak. Thank you. और भी कमेंट्स. क्लासेस बीइंग गोइंग ऑन अ सो फास्ट. आपने पार्टिसिपेट नहीं किया, मैंने क्लास पूरा डिस्कस किया, पूरा टॉपिक डिस्कस किया. लास्ट टॉपिक थोड़ा सा मैंने फास्ट में लिया, उसके पीछे रीजन है क्योंकि मुझे भी तो टॉपिक कंप्लीट करना है ना. यू कैन अंडरस्टैंड राहिल. Srikanth Mehta sir, Google Meet class is better than you. Your two class, but today class is very nice. Thank you so much. No problem. We'll try. थोड़ा सा न्यू इनोवेटिव हमें भी करने दो, हमारे लिए जरूरत होता है ना कि यू कैन अंडरस्टैंड. मैं आपको बहुत ही ऑनेस्टली बताता हूँ, एज ए इंस्टीट्यूशन विल हैव टू एक्सप्लोर. मैं क्लियर बताता हूँ, जब कुछ नया करते हैं तो थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करो. आई नो डैट कि गूगल मीट इज़ बेटर. वहाँ पे हम लोग ऑडियो चैट कर सकते हैं, वीडियो चैट कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं, बहुत सारे हैं. ठीक है, लेकिन थोड़ा सा करंट अफेयर क्लास, बाकी जितने भी क्लास होगा वो आपको वहीं पे होगा, गोल मीट पे ही होगा. मैं भी जब क्लास में तो गोल मीट पे ही. बट थोड़ा सा कोऑपरेशन आप लोगों को भी चाहिए. ऑनेस्टली मैं आपको ये चीज़ें बताया हूँ, मुझे पता है कि आप लोग कोऑपरेट करोगे. आप लोग बहुत अच्छे हो, रियली बहुत अच्छे हो. सभी लोग जो पढ़ने वाले हैं पार्टिसिपेट करते हैं, कमेंट करते हैं, आंसर फॉरवर्ड करते हैं, बताते हैं, बात करते हैं. यार दिस इज़ वेरी गुड एंड आई होप कि जो भी ऐसे करता है उनका पक्का सिलेक्शन होगा. मैं आपको ये बता सकता हूँ. श्योर 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 श्योर. ओके सर. वेरी गुड राहिल. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच सविया. थैंक यू सो मच श्रीकांत. थैंक यू सो मच कान्हू. थैंक यू सो मच सुभद्रा. थैंक यू सो मच स्वागत का. थैंक यू सो मच जयश्री. ओके, लेकिन अभी भी सभी लोग का कमेंट नहीं आया, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर करिएगा. और जब भी कोई प्रॉब्लम हो फील फ्री टू आस्क. ओके, कॉल भी कर सकते हो, ये नहीं बोलता कॉल भी कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो. और किसी चीज से, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, मैं तो ये बोलता छूट आपको मैं देता हूँ, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी चीज से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो फील फ्री टू आस्क. ओके, थैंक यू सो मच प्रियदर्शनी मोहपात्रा जी. दिस इज गुड बट सम टेक्निकल इशू हैड अकर. या थैंक यू सो मच. आई नो दैट. ओके, थैंक यू सो मच. विल मीट सून. ओके, एंड मैं जो ये शेयर करूंगा आपका स्लाइड, तो प्लीज गो थ्रू इट एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट सेशन में धमाका मचा देंगे. डोंट वरी. ओके, थैंक यू सो मच. बाय बाय. गुड नाइट. मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू. एंड बट थोड़ा सा जो स्लाइड में शेयर करूंगा उससे गो थ्रू हो जाना है. ओके, थैंक यू सो मच. ओके, जयश्री आई गॉट योर आंसर. ओके, थैंक यू सो मच. बाय बाय. गुड नाइट. जयश्री नायक, आई गॉट योर आंसर.